Hello students, today we are going to learn about how to integrate definite integral and properties of definite integral. So we will try to understand this with the help of few questions from exercise 7.9 and 7.11. So let us start with it. Of your exercise 7.6. Okay. And this question is integrate e raised to power 2x sin x dx. So this is a form like e raised to power ax sin x, or sometimes it is e raised to power something, anything, ax cos x, like this. Okay, so no doubt it's a product of two functions, e2x sin x, right? We need to apply the integration by parts rule here. So you can take anything as first function, but as if I think of elate, I think the trigonometric comes first. But in this question, you can take this first also and this second also. I always told you that out of trigonometric and your exponential, you can take any one, right? So let us give it a try. Let us give it a try that we take our exponential function as the first function. Now what will happen in this question? Actually, it is a question where you will get the derivative or integration of sine as in terms of cos, and then cos will again have in sine. So it's a never ending question actually, right? So how will we do it? Let suppose it as I, because I will get something repeated again and again. So this question will never finish if I'll keep on integrating it by integrating by parts even. So integrating by parts. What is integration by parts? First function, second function, it is first function integral of second minus integral d dx of first into integral of second, और ये सारी चीज का again dx. ठीक है? In that way it will become e raised to power 2x into integral sin x minus integral d dx of first is your e raised to power 2x into integral of second and this whole dx, right? So this is e raised to power 2x. Be careful that the integral of sine is minus cos, so it is minus cos x minus this is 2e2x, and again it is minus cos, so I'll adjust this negative sign here, and this is like this. Now one more time I can apply integration by parts to this, and it will be like I'll take 2 outside, like 2 outside e raised to power 2x cos x. So one more time integration by parts will be there, and 2 is taken outside, so just this is as first, this is as second. So first function integral of second minus integral differential of first into integral of second, and this is whole dx minus e2x cos x plus 2e2x integral of cos s plus sine. Be careful because it sometimes the mind says no, it is minus cos, because we are very much familiar with the derivative portion. So it is minus 2, so it is 2e2x, and it again becomes sin x dx. So if you will take it outside, this is I is running because I am integrating just I, right? e2x cos x plus 2e2x sin x, and this is minus 4 e2x sin x. So again you can see that it will go to integration by parts again, but it is a never ending process, right? So you will just twice differentiate, and then again you will get again this I. So now what will I do? I will write it as I, right? So this is your minus 4i. Now bring all the i's together, so this is I will go to that side. I times 4i is equal to minus e2x cos x plus 2e2x sin x, right? And plus c, as the integration has stopped now, so after that I will just put as, right? So this 5i, 5i. So I will be your, I will divide by 5 both sides, so it will be something like minus e2x cos x by 5 plus 2e2x sin x, some c will also be there, sin x by 5, and plus c upon 5, which I term it as say c1, where c1 is your c upon, which is the required answer, right?
So now today we are starting definite integral, and in definite integral you will not get something which is out of the box, right? Whatever rules you have studied, now it will be the test of your knowledge, that how much understanding you have developed, that how to integrate a particular question. Okay, but the very important thing here is that why this is a definite integral, that what will happen now, you will have the limits like a to b fx dx, something like this. This is lower limit, this is upper limit. And here when you will integrate, say the integration is your 5, you get say capital Fx. So at last you will, because you must have done it in physics, that the evaluation will be like the value of the function at upper limit minus value at the function at lower limit. So this is the only difference between definite and integral and indefinite integral, and you will not get a c here, no constant of integration, because now the constant of integration is fixed, right? So say I take exercise 7.9. So I'll just take 1-2 examples and then we will have a, suppose I take question number 1, it is minus 1 to 1 x plus 1 dx. So by looking at this question, you very well know it's a simple algebraic one and the integration is just like this. And now I will evaluate this as upper limit to both. So it is 1 by 2 plus 1, upper limit to both, then minus like this, f of b minus f of a. Now be careful with this sign. So it is say your, because it is the upper limit is your 1 by 2, right? Now you have to put the lower limit. So it is minus 1 square upon 2 and then it is your minus 1. Right, I'm altogether putting the upper limit first and then the lower limit first, so that you are careful with the negative signs, and be careful with the bracket also. So half plus 1, it turns out to be your 1 by 2, okay, and then it turns out to be plus 1, right? So it is your 2 itself. So this is the required answer. If I take say question number 4, I take 0 to pi by 4 sine 2x dx. It will be, what is the integral of sine 2x? It is your minus cos 2x upon 2. You very well know it. You have to evaluate it at 0 to pi by 4. So 1 by 2 is outside. Say take the minus sign even outside. So it is 2 into cos pi by 4 minus cos your 0. So this is minus 1 by 2. So cos 2 into pi by 4, that is your pi by 2. So cos 90 is 0. Cos 0 is 1. So the answer is your plus 1 by 2. Okay, so now I will take say so many questions are there. So I will take say question number, okay, I will take number 9. So number 9 is 0 to 1 dx upon under root 1 minus x square. Right? So you know it is 1 upon under root x minus square. This is sine inverse x. And this is from 0 to 1, so it becomes sine inverse 1 minus sine inverse 0. So sine inverse 1, shall I say it is pi by 2 and this is 0 itself? Is that correct? Is that correct? What will happen to question number 12? I told you that whenever you encounter with something like cos square x and sine square x, you should change it to the form of 1 plus cos 2x upon 2, isn't it? Do you remember? Cos square x should be changed to 1 plus cos 2x upon 2 sine square x to this, right? It means fluently you should get the idea that how we are going to integrate. Okay, so this is 0 to pi by 2. This comes as say 1 plus cos 2x dx. So I'll keep on integrating it as I know that how to integrate it. So it turns out to be half. Then 1 is for x. This becomes your, don't go for minus sign, okay? Because we generally feel that it is say derivative of cos is minus sign. So let's know. Always remember that here there is a change and you are integrating, not differentiating. So this becomes pi by 2 plus this is your 1 by 2 sine 2 into pi by 2 is your pi, minus this becomes 0 and this is minus again sine 0. Okay, anybody will get me the value of sine pi? These are 0. What is the value of sine pi? Sure? Shall I say everything is 0 and pi by 4 is the answer? So there comes question number 13.
and it says 2 to 3 x dx upon x square plus 1. Now I know that what should I do is put this as t, so that 2x dx is equal to dt. So x dx is equal to dt by 2. Now dear students, what happened? I'm just going to change this complete question to this form. But remember, these limits were of x. So now you have changed the question to your t and you want to solve it with the help of t. So what should I do? I should change the limits also. So there is no need to go back to x and then put the limits. So better, how will I change the limits? The limits were of x. So when x is 2, the lower limit, x is 2, what will happen to t? T is 2 square plus how much? 5. And when x is 3, it is 3 square plus 1, that is 10. So my limits are from 5 to 10. So it becomes half log mod t. Now there is no need to go back to again the resubstitution, and directly what you can do is it is log 10 minus log 5, right? So this becomes half of log 10 upon 5. So this is half of log 2, which you can write it as log 2 raised to power 1 by 2 or log of under root 2. As you feel, you can term it as, right? Just confirm whether the answer is correct or not. Just confirm by the time I am just taking this as question number 15. ठीक है ये आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है बोलो? x स्क्वायर को t पुट करिए, 2x dx equal to dt, x dx is equal to dt by 2. So this becomes 1 by 2. ठीक है, ये बन जाएगा dt by 2, तो ये dt ये बन जाएगा e raised to power t. ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया चेंज हो गया, बट लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं. When x is 0, t is 0. When x is 1, t is again 1. So the limit को कोई फर्क नहीं पड़ा जी, बहुत अच्छी बात है. Integral is e raised to power t, which turns out to be this half of e raised to power 1 minus e raised to power 0. Be careful, e raised to power 0 is not 0. So the answer is e minus 1. Now question number 16th here is saying that I am integral 5x square upon x square plus 4x plus 3. As soon as you come to know that the degree of numerator is same as degree of denominator, let us divide. No need to think for anything else except this. So it is 5x square plus 20x plus 15 minus minus minus. So this is minus 20x minus 15. So I will get it as quotient plus remainder plus है तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, है ना, अपॉन डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. नाउ बी केयरफुल, बहुत सारे काम हैं जो अब किए जा सकते हैं, राइट? अब ये बताइए इसके फैक्टर बनते हैं भाई? फैक्टर बनते हैं बच्चे, बोलो क्या बनते हैं? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के फैक्टर बनते हैं. ठीक है, तो आप कुछ भी चला सकते हैं, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कर लीजिए या तोड़ लीजिए, जो आपका दिल कर रहा है. ठीक है, आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं चलाना चाहते हैं तो देखो, मान लीजिए मेरा नहीं कर रहा मन, चलो नहीं कर रहा मेरा मन, क्या करेगा कोई, तो मैं इसको ऐसे भी चला सकती हूँ, देखो. ठीक है, ये तो आपकी बेटे अपने गुण हैं आपके, आपको क्या याद है, क्या करना चाहते हो, क्या छोटा हो रहा है, क्या करने से ज़्यादा फायदा है, ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. ठीक है, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. ये तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा. 15 अपॉन 1 अपॉन यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, इसका हाफ 4 माइनस 4 प्लस 3 dx बन गया. यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को t पुट कर दीजिए, 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू dt कर लीजिए. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ में आ जाएंगे, है ना. 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt, तो आप कहाँ से लाएंगे, है ना. तो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर यही है कि ये क्वेश्चन ना बड़ा लंबा खिंच जाएगा. सो बेटर ये है कि आप इसको जो हम कर रहे थे ना वही कर लेते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में. तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं. बताइए ज़रा क्या करते हैं आप लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में, अपने ज्ञान की वर्षा करिए. -1 to 2 20x प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3
dx। ठीक है, तो लीनियर में क्या करते हैं बेटा, पुट लीनियर इज इक्वल टू, तोड़ने का तरीका ही देखना है, लेमडा टाइम्स डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और साथ में म्यू, तो 20x प्लस 15, ये तो बेटा कमांड है आपकी, किस वाली चीज पे आपकी कमांड होगी, ठीक है, प्लस म्यू, तो ये बन गया 2 लैम्डा एक्स प्लस 4 लैम्डा प्लस म्यू, 20x प्लस 15, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 20 एंड 4 लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 15, लैम्डा आ गया 10, तो ये बन गया 40 प्लस म्यू इज इक्वल टू 15, म्यू इज इक्वल टू 15 माइनस 40 कितना होता है, -25। ठीक है, अब ये चेक करना है कि जो मैंने बनाया वो कुछ ठीक बना कि नहीं बना, यहाँ पुट कर लो, 2x प्लस 4 बनना है 20 प्लस 4 दैट इज 25, दैट इज योर 2x प्लस 4 विल बी योर 20 प्लस 4 दैट इज 24। चेक करो भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, चेक करिए, नहीं ये तो यहाँ से तो ठीक आ गया, और 4 लैम्डा प्लस म्यू कांस्टेंट टर्म है, 4 लैम्डा प्लस म्यू दैट इज योर 40 और -25 दैट इज योर 15, आई थिंक इट इज ओके। सो आई कैन ब्रेक द न्यूमरेटर एज, क्या बना यहाँ से देखिए, लैम्डा टाइम्स यानी कि 10 टाइम्स 2x प्लस 4 राइट, अपॉन इसको तोड़ लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, और मैंने तोड़ लिया एक और इंटेग्रल में 1 to 2, और ये टूट गया 1 to 2। वैसे आपको पता होना चाहिए f डैश x अपॉन एफ एक्स में टूटता है, -1 अपॉन क्वाड्रेटिक में टूटता है -25 अपॉन योर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अगर ये आपको पता हो तो आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, इतनी ज़्यादा कहानी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया बेटा 10 माइनस 5 माइनस, यहाँ से 2 भी कॉमन लिया जा सकता तो 20 को बाहर कर, पर फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, आप 10 को ही बाहर करिए, अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो ये आपका डी टी अपॉन, ये देखिए पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू टी है ना, सो योर 2x प्लस 4 dx इक्वल टू डी टी। बड़ी सारी चीज़ें अगर आपको लग गया है पता तो ये डी टी अपॉन टी है, आप लिमिट चेंज करना चाहते नहीं तो x में भी सीधा लॉग मॉड लिख सकते हैं राइट, वो मैंने बोला ना कि वो अपना अपना वो है, x 1 है तो t कितना बन जाएगा 1 प्लस 4 5 और 8, और x जब आपका 2 है तो t बन जाएगा 4 प्लस 8 12 और 15, तो ये लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 8 to 15 इफ यू डोंट वांट टू गो बैक टू दिस। ठीक है, और ये बन गया 25 बाहर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, तो ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ बच गया 5 माइनस 10, है तो पेशेंस की टेस्टिंग, ठीक है, बट नेचुरली बेटा अब इंजीनियरिंग करनी है या कुछ ऐसा करना है तो पेशेंस तो दिखानी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़े ना बिना साधना के कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये बन गया 1 to 2 dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। बोलो कौन सा फॉर्म बनाइए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बताएगा कोई क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म। मैं ये सारा मिटा दूं तो मैं इसकी जगह यही कर देती हूँ, आई डोंट वांट टू शिफ्ट द स्क्रीन बिकॉज आई हैव टू आस्क फ्रॉम यू कि मैंने क्या लिखा था दोबारा, तो बेटर है कि मैं यहाँ, ये तो डिवीजन तो कर ही लोगे, सारा नहीं मिटाऊंगी बेटे, जो डिवीजन कर लोगे तुम। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको ये सब चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ वो उसी टाइम मिटेंगी, वो चिंता नहीं करो उसको। ठीक है, सो ये बन गया 5 माइनस 10 लॉग 15, ये ऐसे ब्रैकेट में ऐसे 10 को करके लॉग 15 माइनस लॉग 8, ठीक है, जो कि 15/8 बन जाएगा बाद में, एंड माइनस 25, ये फॉर्मूला बना जी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a लॉग मॉड एक्स, है ना, सो 1 अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। दिक्कत अब ये है कि अब लिमिट भी चलेगी, ठीक है, बस गलती से आप वो भूलना नहीं, 15 अपॉन 8 माइनस 25/2, ठीक है, और ये बनेगा बेटा लॉग ऑफ, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, पूरे में अपर लिमिट पुट करेंगे, ये नहीं ऊपर अपर की नीचे लोअर की, इसका ध्यान रखना, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2 + 2 4, 4 - 1 is 3, एंड अब नीचे बनेगा आपका 2 + 2 4 एंड दिस इज +1 दिस, राइट, सो लॉग ऑफ ए, समझ रहे हो ना, ये ऐसे बनेगा log ऑफ ए माइनस log ऑफ बी।
ठीक है, तो log ऑफ b कौन है? 1 + 2, 3 - 1 is 2 एंड 1 + 2 + 1 कितना हो गया? 4, ठीक है। सो ये हाफ, सो आपके पास आ गया 5 - 10 log 15/8 एंड दिस इज -25/2 log ऑफ, ठीक है, ये 3/5 डिवाइडेड बाय होना था ना 1/2, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। चेक करो आंसर, थोड़ा और भी रिड्यूस कर सकते हो आप इसको, log 15/8 कुछ कॉमन ले सकते हो। आई डोंट नो वेदर ये लिया है उसने कि नहीं। 6/5 और सी नहीं लगाना बिल्कुल भी। चेक करना आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, देखिए ये नो डाउट तुमको लग रहा है इट इज लाइक 6x + 3 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा ना करूं मैं न्यूमरेटर को ब्रेक कर लूं। ये भी तुमको सोचना है भाई, ये भी तुमको सोचना आना चाहिए कि क्या मैंने इतनी बड़ी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक लगानी है कि नहीं लगानी है, क्या लगाने की जरूरत है कि नहीं है। जस्ट सी दिस, ठीक है, ये बन जाएगा पुट x² + 4 = t, 2x dx = dt। देखिए एक और चीज बताती हूँ, आप लिमिट नहीं चेंज करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, 1/2 dt अपॉन योर t, पर यहाँ लिखेंगे नहीं, dt अपॉन आपका आ गया t, लेकिन जब आपको इसको पूरा इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, x में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप x की लिमिट को यूज कर सकते हैं। ये है आपका 1/x² + a² विच इज योर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। सो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, राइट। सो लिमिट लगी इसको, आप इसको 3 log mod t नहीं लिखेंगे, आप इसको 3 log mod ये लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका ये tan इनवर्स 1 और ये tan इनवर्स 0, ये बन गया 3 log ऑफ 4 + 4 is 8 minus log of your 4, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको। 3/2 और ये आपके पास आ गया π/4, ये तो आपका, ठीक है, ये बन गया log 8/4 plus 3π/8 which is your 3 log 2 plus 3π/8। चेक करना जरा बेटा आंसर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में केयरफुल रहने की जरूरत है, ठीक है, और क्या केयर करने की जरूरत है वो आपने देखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है, आई एम टेकिंग 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है 0 से 1 x(ex) plus sin πx/4, right? You very well know that we have to integrate it separately, plus 0 to 1 sin πx/4 dx, right? So here I need to apply integration by parts. You want to go for this first as second whatsoever, so please remember integration by parts. If you are not sure, I will advise you to once write the formula in order to avoid the mistake, d dx of first into integration of second, right? So this is first function into integration of second, right? ये याद रखिए कि जहां जहां x है ना उसको लिमिट लगनी है, चाहे वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर है चाहे अंदर है, ठीक है। यही चीज यहां समझने वाली है, माइनस इंटेग्रल डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक है, यहां नहीं लगनी है, ये जो पूरा यहां से मैटर बाहर आएगा उसको इंटेग्रल लगना है, ठीक है। एंड दिस इज योर माइनस कॉस पाई एक्स बाय 4 डिवाइडेड बाय π/4 एंड इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। सो दिस इज योर x(ex). नाउ ये जो आपकी लिमिट लगेगी ना अपर और लोअर, ये x इससे अछूता नहीं है, x को भी लिमिट लगनी है, इट्स पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। आप ऐसे करते हैं बट इंटीग्रेशन का वो पार्ट है, यही चीज आपके पल्ले अगर पड़ जाए, ये 1 आया और ये ex, ठीक है। सो इसीलिए ये 4/π और ये बन गया बच्चे cos π/4 माइनस cos 0। कॉस से हमेशा बच के रहा करो, क्योंकि हमें क्या लगता है कि ये जो है ये 0 हो गया, ठीक है, कि ये जो है मतलब कॉस तो बेचारा क्या है, कॉस 0 होके भी खत्म नहीं होता है और वो 0 बनता नहीं है, तो ये बन गया 1/√2 और ये -1, तो ये आ गया e माइनस e बनेगा e1 माइनस e0, e भी ऐसा ही है परेशान करने वाला, ठीक है। सो आप उसका ध्यान रखेंगे। सो e माइनस e और ये बनेगा बेटा माइनस माइनस प्लस ये 1,
ठीक है, तो ये तो बेचारे खत्म हो गए and we are in the process of just finding out this is 1 plus 1 minus, okay, so this is 1 minus 4 upon pi 1 upon root 2 minus 1, right? I hope just check. क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा क्वेश्चन 1 by a रह गया, क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22, 0 is 2 by 3 dx upon 4 plus 9x square 1 by 9 outside 0 to 2 by 3 dx 2 by 3 whole square plus x square. So 1 upon x square plus a square is 1 upon a tan inverse x upon a. Formula is not right. The question is never going to be right. Tan inverse x upon a plus c. This is 0 2 by 3. 3 3s are 9, 1 by 6 tan inverse 1 minus tan inverse 0. This is 1 by 6 into pi by 4 because it becomes 0, pi by 24. So properties of definite integral. Properties of definite integral always say the first property is that integral a to b fx dx is same as integral a to b ft dt. Means if the function is getting integrated with respect to x and the limits are this, and the function is getting integrated with respect to t, limits are this, right? For example, x square dx from 1 to 2 or t square dt from 1 to 2. You know the integral will be x cube by 3 and I have to evaluate from 1 to 2, right? It will be t cube by 3 and I have to evaluate from 1 to 2. So you will find that the answer is going to be same, isn't it? Isn't it? Answer is going to be same. So integral a to b fx dx means either we are integrating with respect to x or with respect to t within the same limits. The answer is going to be same. This is your first property of definite integral, and a question will come in which we will use maximum properties of definite integrals, right? This is the first property. Second property says that a to b fx dx is same as minus times b to a fx dx. That if I interchange the position of the limits, I make upper the lower one, lower the upper one, then the answer is means the connection is that it becomes minus times, right? So let us see if it is fx, integral is fx from a to b, and this is also fx from your I'm keeping minus sign outside, this is from b to a. Now what will happen? I will write it as fb minus f of a, and this is f of a minus f of b, right? So when I'll adjust the negative sign, they both will become equal. So I can, what can I do is, if I want to say shuffle the limits, so the result will be altered with the negatives. प्रॉपर्टी कहती बड़ी ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा लगेगी ये प्रॉपर्टी, that integral a to b fx dx, right? आपके पास a और b इंटरवल है कोई जिसके बीच में एक पॉइंट c लाई करता है, ठीक है? तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको दो इंटेग्रल में तोड़ सकते हैं, a to c fx dx plus c to b fx dx. इन बिटवीन पॉइंट में आप इसको तोड़ सकते हैं. ये काम आता है बहुत ज्यादा. जैसे आपके पास कोई इंटेग्रल है, मान लीजिए 1 to 4 है, और ये इंटेग्रल चल रहा है जी x minus 2 mod. Now everybody knows that x minus 2 mod की जो जीरो है इसकी दो वैल्यूज होंगी. प्लस टाइम्स x minus 2 बनेगा ये when x minus 2 is greater than equal to 0 या x is greater than equal to 2, और माइनस टाइम्स बनेगा जब ये लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि x इज लेस देन 0. यहाँ इक्वल टू यहाँ नहीं लिखते. तो दो तरह से, तो ये इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है एक्चुअली वो है 2, और 2 जो है वो आपके इंटरवल 1 4 के बीच में करता है लाई. सो ऐसे क्वेश्चन को मुझे दो तरह से तोड़ के करना पड़ता है. आई विल ब्रेक द लिमिट्स फ्रॉम, दिस इज माई c 1 to 2 x minus 2 dx plus your 2 to 4 x minus 2 dx. Right? Now what will happen? This is actually less than 2 and this is greater than 2, because मेरा breaking point 2 है तो मैं 2 के ऊपर ही फोकस कर रही हूँ. I'm not focusing at 1 and 4. So is less than 2 and is you're greater than equal to 2.
सो लेस देन 2 में फंक्शन जो है वो कैसे खुलेगा, मॉड को तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना, तो ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बीच बीच में समझाती भी जा रही हूँ कि क्या यूज क्या होने वाला है इस प्रॉपर्टी का, राइट। एंड देन इट विल बिकम योर 2 to 4 एंड x minus 2 dx। अब आप वो देखो अभी जो पीछे एक प्रॉपर्टी पड़ी उसका काम करते हुए आप इसको ये भी कर सकते हो। मैंने नेगेटिव साइन बैलेंस कर लिया, ये वो प्रॉपर्टी का, अगर आप नेगेटिव के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप इंटरचेंज कर दीजिए लिमिट्स को, ये प्लस में चला जाएगा। So this way, this property is going to be very, very helpful in solving the modulus questions. Property number 4. Property number 4 of definite integral says that a to b fx dx. Right? We will apply and we will find. You have proofs of these properties also. Right? So someday if we will require, then we will use them. Okay. So a to b, and it can be written as the sum of the two limits minus x dx. Right, this function can be written like this using the property of definite integral. And as an extension to this, if say it is something like this, means there is no lower limit, it is 0, and upper limit is like this, so this question will turn to f of, now instead of a plus b it will be just a and minus x dx, right. So this is an extension to this property and is a very, very important property, right. So we will use it in very first property that we are going to use is this one only, so you will understand that how we are going to apply, right. Then comes the property of 0 to 2a, right, fx dx। 0 to 2a कौन सी कहाँ लगनी है, ये तो बेटा जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ ये प्रॉपर्टी लगेगी। सो ये प्रॉपर्टी लगती है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। आप इसको दो तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं एज वी बाइफरकेटेड प्रॉपर्टी नंबर 3। वन इज आधी लिमिट में ले जाइए 0 to a फंक्शन इटसेल्फ प्लस आधा जो उससे नेक्स्ट है दैट इज f of 2a minus x dx। नंबर 7th प्रॉपर्टी होगी 0 to 2a, ठीक है, fx dx। इसको आप खोल सकते हैं 2 times 0 to a fx dx में, अगर f ऑफ इसी का एक्सटेंशन है 2a माइनस x जो है वो fx के बराबर होता है। जैसे बेटा आप इवन ऑड फंक्शन चेक करते हैं, आप फंक्शन में 2 ऑफ a माइनस x अपनी लिमिट पुट करके देखेंगे, अगर fx के बराबर है तब हम कहेंगे कि जो ये इंटेग्रल है वो रिड्यूस हो जाएगा 2 times 0 to a fx dx में। और अगर कहीं ये जो चीज है वो माइनस टाइम्स fx dx में चेंज हो जाए, मान लीजिए माइनस टाइम्स fx में आ जाए, तो ये इंटेग्रल सीधा 0 में रिड्यूस होता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आएगी, इसको तो आप देखते ही पहचान जाएंगे, माइनस a to a, ठीक है। ये भी जो है वो आपकी 2 times 0 to a fx dx में चेंज करती है अगर आपका फंक्शन जो है वो इवन है, यानी f of माइनस एक्स fx के बराबर है, और 0 में रिड्यूस कर जाती है अगर f of माइनस एक्स जो है वो माइनस एक्स के बराबर है, ठीक है। तो ये 8 कुल टोटल प्रॉपर्टीज आपकी लगने वाली हैं, और शुरुआत इसको आपको स्लाइड शो में मिल जाएगा, आप इसको बाद में आराम से देख लेना। वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टी नंबर 4, राइट। बहुत कम, एक्सरसाइज 7.11। Remember students, if it is written that using properties of definite integral solve, you have to use the definite integral property. And if it is not written, that simple question is that you may use definite integral property because it makes the solution simpler if you are not comfortable with some other way. But if it is written that using the properties of definite integral, you have to use some of the property out of it, whichever is perfect for the question, right? For example, C, question number 1. You're saying the simple question was 0 to pi by 2. We did it in the, I think, last exercise that I told you, you make it as 1 plus cos 2x upon 2 and then integrate, right? But what else if I use the properties? See from here. What I will do, I will term it as I, and I will using the property 0 to a fx, fifth property, dx as 0 to a f of a minus x dx. What will happen? I will write it as, again this is I is there, make it as 1 because I'll reuse it. So I will become 0 to pi by 2 and it will be your f is cos square and a minus x means 90 minus x. So what is cos 90 minus theta? It is your sine theta. So it will be sine square x. Right? So after you apply the properties, what will you do? You will add 1 and 2. So you will find that how it makes the question simpler. So when you will add, so both the integrals will be added with the integrand as cos square x plus sine square x dx.
which is your 0 to pi by 2 1 dx, can be written as x and 0 to pi by 2. This is pi by 2. Your 2i is pi by 2 and implies I is pi by 4. तो ये क्वेश्चन को कितना सिंपल कर देता है. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is 0 to pi by 2. It is not easy to integrate it even with the formula. It's a very critical and a question like that. अगर आपको इसको integrate करना पड़े तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसको कैसे integrate किया जाए, right? But see, if I again use this property, using the property, you have just to understand the pattern, right? Right? So आपको मालूम है वो property कहती है f of x dx can be written as 0 to a f of a minus x dx. So definitely this I is going to be 0 to pi by 2. It will be sine 90 minus x the power is raised to 3 by 2, and this is your sine 90 minus x 3 by 2 plus cos 90 minus x this. Right, now you very well know that whatever is there, this is equation number 1. Remember, you are again going to reuse it. Sine will change to cos, right? This sine will become cos, right? Okay, sorry, 90 minus x. So this is just cos, not 90 minus x. This is cos. This is again, this becomes cos 3 by 2, and this becomes sine. This 90 minus x will become sine 3 by 2x. Now again I will adding 1 and 2. So the left hand side will become 2i and it is 0 to pi by 2. If I take LCM of this and this, you very well know it is just cos 3 by 2x. Look at the pattern, how simplified it has made the solution. And it is again sine 3 pi by 2x plus x, and every time it is going to become as 1 dx. You remember that it will be x. This is just pi by 2 and I is pi by 4. क्वेश्चन नंबर 15 1 मार्कर क्वेश्चन है ये. अगर आप इस इंटेग्रल को अकेले में देखें और बिना आपके पास अगर ये आ जाए तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा कि इसका क्या किया जाए, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए कि प्रॉपर्टी इसको कितना सिंपल कर देती है, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a fx dx. लुक, ये रेस्क्यू में आती है ये प्रॉपर्टी आपकी, दिस. सो आई विल बिकम 0. क्यों? क्योंकि 90 है ना तुम्हारे पास, बट एक जगह और वंडर होगा 10 वाले क्वेश्चन में, वहां पाई बाय 4 के साथ भी कमाल करेगी प्रॉपर्टी. सो दिस इज 90 माइनस एक्स माइनस कॉस 90 माइनस एक्स. इसको यूज करना है, इसलिए इसको भूलना नहीं है, 1 की जगह मत कर देना. साइन 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स. Now look what is happening. It is 0 to pi by 2. This becomes cos x minus sin x. This is 1 plus cos x sin x. Now again आपको मालूम है अब क्या करना है. क्या करना है भाई, बोलो. नेक्स्ट स्टेप क्या, ऐड करेंगे 1 and 2 को. आई विल गेट 2i. और देखिए क्वेश्चन का क्या हशर हुआ. LCM is going to be, because the denominators are same, 1 plus sin x cos x. And what is happening to the numerator? It is turning out to be 0. So this side is 0 because nothing is there. So 2i is equal to 0, I is equal to 0 is a very, very important question. So question number 5th is integral minus 5 to 5 mod of x plus 2 dx. Now you very well know the 0 of this x plus 2 is minus 2. So the limit will break from minus 5 to minus 2, right? And then minus 2 to 5, right? Which property we will use? A to b fx dx is equal to a to c fx dx plus c to b fx dx. Right? You need not write that definition that x plus 2 is plus x plus 2. If you want to, then you can. Otherwise, I think it is very clear to you that it will come as this if x is greater than equal to minus 2, and it will come as minus times if it is less than, right? So you will break it to from minus 5, the lower limit, to the breaking point is minus 2 here. And who is my x plus 2? And then it is minus 2 to 5. This is your x plus 2 dx, right? So minus 5 to minus 2, as this is because the point of concentration here is minus 2, right?
So it is below minus 2 and it is up minus 2. So below means less than. So it will be opened as minus times x plus 2 because I have to take it out of the mod before integrating. So this is your plus x plus 2 dx. राइट अगर आपको नेगेटिव साइन के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर 2 का इस्तेमाल करके इसको सेट कर लीजिए, और अगर है तो आप जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. ठीक है. It is x square by 2 plus 2x and it is minus 2 to 5. So it becomes minus. So this is 4 by 2, I think it is 2, and then it is minus 4. Be careful with the negative sign. Lower limit it is 25 by 2 and it is minus 10. So since we are in the bracket, so there is no need to worry. So it is 25 by 2 plus 10 minus, so it is 4 by 2 is 2 and then it is minus 4, right? So this is your minus 2, then it is minus 25 by 2 and it is plus 10, right? Be careful with the negative sign outside. So 25 by 2 plus 10, then it is minus 2, so it will become plus 2. So I'll just adjust the signs here from now. 2 plus 25 by 2 minus 10 plus 25 by 2 plus 10, and then I think it is plus 2. So if it is 50 by 2 plus 4, shall I say it is 29 answer?